Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to understand more on share capital, and with today's session, we are going to cover about the premium. I hope you have you gain a good knowledge in the last session. So yes, we will discuss in both the language and try to help all our aspirants. आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. आई बिलीव आपने लास्ट सेशन का बेनिफिट मैक्सिमम उठाया हो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल के पेपर में थ्योरी की ज़रूरत नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको निकाल देना है, क्योंकि थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग हमें थ्योरेटिकली चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली, नॉट एग्जैक्टली थ्योरेटिकली बट कॉन्सेप्चुअली जो है चीज़ों को समझना चाहिए. उसके बाद हमें फिगर्स के साथ प्ले करना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. ठीक है, और हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, राइट. Okay, so issue of shares at premium, that means a company, means I am the company. I hope you have referred the last session. So company can issue the shares at a face value, okay, and if there is a good company, a good successful company like me who have a higher value, and I can issue the like value of the shares higher than the fair value or higher than the face value, then that a higher portion, that the higher portion than the face value, when that means when a company issued a price higher than their face value, that is said to be they are issuing at premium or they issued at premium. Okay, so that excess of the issue price over the face value, whatever the portion of excess of issue price over the face value, is the amount of premium. So give me a moment to draw up a diagram so I will help you to understand more precisely what is the premium. So we have a face value, that means in the case of par, the company is issuing at face value, at par. Okay, that means the issue price is equal to the face value. Okay, but what if the issue price is above than the face value? That means this is the issue price. Okay, so issue price is going up. So when we see the issue price is higher, issue price is issue price is higher of what? Of face value. When issue price is higher than the face value, we can find it as a premium. Okay, and when the issue price is at lower edge, okay, so we will call it at issue at discount. We'll discuss that also in separate session, but with today's we'll take, because in the discount I have to just give you a thumb theoretical informations. So if we have some time of 2-3 minutes, we'll cover here only. Okay, so issue prices, if the higher than the face value, then it will be at a premium, and do not memorize. Okay, so suppose the face value or it was rupees 10, face value was rupees 10. So if it issues at 10, it is at par. If it issues at say rupees 12, so it will be at premium, and now rupees 2 is your premium value. Okay, and it can also be issued if the company is going some situation, they can issue at say rupees 8, then 2 rupees is the discount, what is the less than the your face value. Okay, so this is all about the basic understanding of the security premium. We'll discuss the clauses and provision of the Companies Act in a while. So give me a moment to conclude in the other language. तो आज के सेशन में हमने कवर करना है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू कर रही है फेस वैल्यू से ऊपर, कंपनी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, हाई वैल्यू होगी उसकी, तभी वो कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ऊपर के वैल्यू पे शेयर इशू करती है. ठीक है, जब कंपनी जो है शेयर को इशू कर रही है फेस वैल्यू से ऊपर, इशू कर रही है फेस वैल्यू से ऊपर, तो उसको बोलते हैं कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं प्रीमियम पे. ठीक है, तो जो भी एक्सेस का पोर्शन, यानी 10 से 12 वाले एग्जाम्पल में 2 रुपए जितना एक्सेस का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम, यानी एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू. कुछ भी याद मत करिएगा, समझिएगा. कोई कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग लग रही है तो पूछिएगा, लेकिन अगर याद करोगे ना तो एग्जाम में रिकॉल करते रह जाओगे, और अगर समझ के जाओगे तो वो आपके लिए बेस बन जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका इशू प्राइस और फेस वैल्यू और आपका प्रीमियम का.
ठीक है, तो हमारे पास एक फिगर हमने बनाया है कि अगर फेस वैल्यू के इक्वल पे हम इशू कर रहे हैं तो पार पे कहलाता है, अबव ऊपर कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कहलाता है, और नीचे करते हैं तो डिस्काउंट पे कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रोविजन समझेंगे हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के। सो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। Okay, so I'm writing the bold words, securities premium accounts. Okay, so the premium, whenever there is a situation of the premium on an issue of shares, it is not to be treated as a revenue nature, so we cannot treat it as a revenue profit. Okay, so it is considered as a capital profit, so this will be considered as a capital profit, or sorry, not profit, we can exactly use, we can use the receipt. Okay, so it's not a revenue nature, it's of capital nature. As per the Companies Act 2013, when a company issues shares at a premium, whether it for the cash or in any form, a sum equal to the premium amount, whatever the amount of the premium collected, whatever the amount collected as a premium on the issue of shares, that must be credited to a separate account. That separate account is called as a security premium account. Okay, and there is no restrictions in case the company's account asks on the issue of shares at premium, but there are certain restrictions on disposal. Well, like company is on going on the disposal thing, there is a restrictions, but there is no restriction as per the Companies Act on the issue of shares at premium. That means when a company deciding to issue their shares at premium, there is no restriction on that. Okay, so there is some restriction as per the Companies Act on application of premium money received, which is as per section 52 subclause 2 of the Companies Act 2013. That means that security premium must be used for some specific purpose. That is only the restriction. That means a disposing, there is a restriction on disposing actually, not on issuing the things. Hope you are gathering the information. Okay, so I'll highlight that theoretical portion that might be asked in your question, so I want you to be well prepared enough. Okay, so section 52 subclause 2, it is not mandatory to memorize the section. So if you are comfortable, quote the right quote, do not mention the wrong quotations, to use it the right one. Okay, of Companies Acts 2013. So they have no restriction. Again, I am recalling you, there is a no restriction on the issue of shares at premium, but they have certain restrictions while the time of disposing of. That means a restriction on application money, which is issued, application of premium, whatever, either it application or allotment. So premium, so that may be applied, that may be used for towards the issue of unissued, like fully paid bonus shares. So restrictions, I am just mentioning the restrictions. Okay, I'm writing this for your purpose. Suppose if it come into the examination, you can use it. So restrictions, or we can say that under section 52 subclause 2 of the Companies Act 2013, security premium account, I'm writing here, I'm writing SP, is it okay? Okay, security premium account can may be applied by company, may be applied or used, applied by the company. It's a theoretical portion of the Companies Act, so that's why I'm just giving you as an extra knowledge. Okay, so that can be applied by the company for what purposes? First, on for the purpose of issue of unissued, means they are going to issue of the unissued shares of a company. Share of company to whom? To the members of the company. To the members of company. CO is the company, I'm writing shortcut. Okay, how? As a fully paid bonus shares. Point to be noted, fully paid, because while doing the bonus shares you have to recapitulate this. Okay, that we security premium can be used to issue, but for fully paid bonus share, fully paid bonus shares. So now you can see it's no restriction on the issue of shares at premium, but on the use of security premium. So security premium first can be used to issue the unissued shares of the company to its member as a fully paid bonus share. Clear? Second, the security premium can be used to write off the preliminary expense. So I'm writing shortcut, write off
preliminary expenses. I am sharing this information is just because of an extra knowledge. There is nothing as portion of theory of companies account in a part of your, because it's a part of law subject. But I'm giving you here only is just because I want to well prepared for all the surprises UPSC going to give you. Okay. So writing of the preliminary expenses or whatever what it can be writing of the expenses. I'm writing mention and WO is the writing of. Okay. Writing of expenses, or we can call this or any commission paid or commission paid. Okay, or what we can call as either for the commission paid or any kind of discount allowed, or any kind of discount allowed on what, on any issue of shares or debentures of the company, on any, I'm writing in cap because you it must be in your brain, on any issue of shares or debentures. Clear? So a preliminary, your security premium can be used to write off the expenses on the issue of shares or debentures. Preliminary security premium can be issued for paying commission for the issue of shares or debentures. Security premium can be used to be allowed as a discount on issue of shares or debentures of the particular company. Hope it's clear. Okay, and where else the security premium can be issued? It can be issued in providing the premium on like your redemption of preference shares. So I'll write in the clear word so that if it came up you can just recall from here only. So for we can say the word at providing, providing premium. Okay, providing premium payable on redemption. Okay, redemption means while withdrawing the money. Okay, redemption of, I'm writing in cap, any. Okay, redemption of any redeemable, that means your redeemable preference shares, redeemable, I'm writing shortcut preference shares, I hope it's okay with you. Okay, or any of the debentures of the company, redeemable preference shares or debentures. So you can use it for preference shares, but that should be redeemable, or the debentures. Okay, so that means while redeeming the debenture, while redeeming the preference shares, company redeeming at premium, so this security premium can be used to pay for the premium or the time of redemption of the redeemable preference shares and the debentures of the company. Hope it's clear. And this security premium, as per the Companies Act 2013 section 52 subclause 2, is also useful for purchase of shares for their own shares, which is as per section 68. Okay, so I'm writing shortcut because this is, again I'm reminding you, it's an extra knowledge. For purchase of its own shares or other any other security, other security. 68. Clear? So we have seen that at, how the security premium account can be utilized. Okay, but that should be in any of the mode except in this the above modes, means the utilization amount of the security payment premium which the issued at premium. Okay, in any of the modes which is specified, not in other than it. If the companies goes in any other provision, so they will attract the provision relating to the reduction of share capital, and that will be fall as per the requirement of Companies Act. Okay, so how you can disclose the security premium? It is very important to show the security premium. So Companies Act already asked you to prepare a separate account, so that need to be separately disclosed. So we can disclose it, it's a liability for the company and it can be used for n purposes. So we will disclose on the balance sheet, liabilities, under the liabilities side under the balance sheet, and other, because it's a capital nature, so under the reserve and surplus, reserve and surplus, securities premium.
Hope it's clear. So this premium usually payable with the installment, maybe at the application or allotment, and it's 90% it's on with the allotment. So there are some companies who charge the premium with application money or partially with the allotment. It's definitely mentioned in your question, so you can apply accordingly. Okay, so we will discuss the accounting treatment shortly, or we can discuss and then I'll discuss in other language quickly. And with this session only, I'm going to discuss about the issue of shares at discount because it's ever some theoretical understanding only. Okay, so just give me a moment to share the journal entry, because we already discussed in the disclosure and the balance sheet. So premium, okay. So I know I on the behalf of company, I issue the shares. Means I asked you, okay, go, give me the second installment. So I asked you to pay the premium amount at that time because I know I want it, because I issued at more than the face value. So I do it. Okay, I do it in the books of account. So while at the time of allotment, I make a due entry. What I hope you watch the last session, because if you didn't, there will be n doubts in your mind. So it's my humble request, watch your last session and then only watch this session, because few things I'm not going to recapitulate here once again. Okay, so share allotment, I hope you can understand why we are passing this entry and why share allotment account is debit to. Obviously it will be to the share capital, but now I got the money more than the face value, so we have to transfer it into a separate security premium account because it's a capital receipt, to securities premium account and to yes, share capital. I know, I hope you people can recall why this share capital is credit. Do not memorize and don't even think to memorize any point here. So try to understand. So with the share allotment, whatever the allotment money due, that means including premium. Okay, so the due amount including the premium, in this we can say 12 rupees. In this we can say rupees 2, in this we can say rupees 10 in our last example. And narration you can write as being allotment money due on issue of shares. And obviously after that you will collect the money. So bank account, we are going and collecting the money, bank account debit to share allotment against what? The allotment, the total amount. So please, if you didn't watch the last session, watch it, because if you didn't watch, you don't understand why we did the share allotment into the debit, why we credit the security premium account, why we credit the share capital account. Okay, so these two are the liabilities, share capital, because I know your whatever money you gave to me is not going to be my capital, but I asked you to pay the premium, that is also my liability, and I reserve it for the other purposes because I issued, because I have my goodwill and I worked for it, so that's my premium amount. So that way I also keep it in the separate account as per the Companies Act, requirement of the Companies Act 2013. So please give me a moment to conclude in the other language, and then we will discuss the issue of shares at discount with this same session only. Okay. ओके तो आज के सेशन में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम, शेयर्स एट प्रीमियम. ठीक है, तो हमने ब्रीफली ये डिस्कस किया कि कब जो है फेस वैल्यू से अगर ज्यादा पे इशू हो रहा है, यानी हमने माना कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है और उससे ज्यादा पे इशू हो रहा है, यानी 12 पे हो रहा है सपोज, तो हम शेयर्स को इशू जो है हायर वैल्यू पे कर रहे हैं फेस वैल्यू से, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम, और लोअर पे होता है तो डिस्काउंट होता है. ठीक है, तो कंपनी जो है अपने शेयर्स को जब फेस वैल्यू पे इशू करती है तो जरूर कंपनी के पास कुछ सक्सेस होती है उनकी, कुछ वो अट्रैक्टिव होते हैं, तभी वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स को इशू करती है. ठीक है, जब भी जो कंपनी है अपने शेयर्स को हायर प्राइस पे इशू कर रही है फेस वैल्यू से, तो जो बैलेंस पोर्शन है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, और जो एक्सेस प्राइस है फेयर वैल्यू को, उसको हमने जो है प्रीमियम अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है. इसके लिए हमने डिस्कस करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, ये जो प्रीमियम है ये रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का है. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहती है कि भाई आप जो कंपनी हो, यानी मैं कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है, कैश या किसी भी एग्रीगेट फॉर्म पे, एप्लीकेशन के टाइम भी ले सकती है पैसे, अलॉटमेंट के टाइम में भी लगती है, जो मन है वो कर लो, लेकिन सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना. उसको बोला उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ये कंपनी का आदेश है, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू किया है प्रीमियम पे, किसी भी फॉर्म में इशू किया हो, जो आपने कलेक्ट किया है शेयर्स पे, उसको सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर देना, उसको कहना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी कि भाई इशू करना है तो ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, XYZ कर लो. नो 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 नो.
नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू, बट हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन यूज के लिए किया कि भाई ये जो क्रेडिट अकाउंट खाते में रख देना, ये खाता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, इसमें जो पैसे हैं इसको मेरे आदेश के हिसाब से यूज करोगे, इशू कैसे भी कर लो उसमें कोई नहीं है, लेकिन यूज मेरे हिसाब से करोगे। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी उसे हम समझेंगे, वो बताई गई है सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्या सेक्शन लिखना जरूरी है? नहीं, गलत नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो सही लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूं क्योंकि ये आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन की नॉलेज है, ठीक है। और आई बिलीव यूपीएससी जिस तरीके से सरप्राइजेस ला रहा है वो कुछ भी ला सकता है, तो हम एक बेसिक तैयारी करके चलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज, जो उस खाते में पैसे पड़े हैं उसका यूज कंपनीज एक्ट बताता है कि भाई ये जो पैसे हैं इसको आपने अनइशूड शेयर्स को इशू करने के लिए लेना है, ठीक है। लेकिन वो जो यूज होगा अमाउंट वो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, पार्शली पेड नहीं है। अगर पार्शली पेड है तो उससे पहले फुल्ली पेड करो, उसके बाद बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। वहां पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस को देने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन फुल्ली पेड। बोनस के चैप्टर को कवर अप करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इस सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां यूज कर सकते हैं भाई, जो भी प्रिलिमिनरी खर्चा हुआ था कंपनी का उसके लिए भी यूज कर लो, ठीक है। और कहां यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, जो खर्चे हैं, खर्चों को राइट ऑफ करना है या किसी तरीके की कमीशन पे करनी है या कोई डिस्काउंट अलाउ करना है, किस लिए, किसी भी प्रकार का शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए। सो विद राइट ऑफ, WO मीन्स राइट ऑफ, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म ही लिखना है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और इन सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां अकाउंट यूज होगा अमाउंट भाई, प्रीमियम पे करते वक्त रिडम्पशन के टाइम में। किसका रिडम्पशन? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल की बात नहीं, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा और उनको उस वक्त अगर प्रीमियम दिया जा रहा है तब इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। या डिबेंचर्स को, जब डिबेंचर्स को प्रीमियम दिया जाएगा उनके रिडम्पशन के टाइम में, तब इस सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज कर सकते हैं। और आखिरी के फॉर्म में जो परचेज कर रहे हैं, खुद का शेयर्स कंपनी कर रही है या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सेक्शन 68 के अंदर, उन सब जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 में बताया है, लेकिन इशू के लिए उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, लीगल नॉलेज मैंने दे दी, बिकॉज यूपीएससी कब सरप्राइज ले जाए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब ने हमने ये बोला कि भाई ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, ये जो ऊपर मेंशन 4-5 पॉइंट दिए ना, ABCDE, उन्हीं जगहों पे यूज करना है। और अदरवाइज ये जो अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, अगर इनके अलावा कोई मोड है, ठीक है, एक्सेप्ट इन एनी ऑफ दीज मोड्स, ठीक है, इनके अलावा कोई भी अदर मोड है, तो ये प्रोविजन क्या मान लिए जाएंगे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, जो कि सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में या आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोज कहां करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटीज और रिजर्व। क्यों? याद कर लेते हैं फटाफट। नहीं, याद नहीं करना, समझना है कि भाई आपके जो पैसे आए थे ना मेरे पास शेयर होल्डर, वो भी तो एक लायबिलिटी थे, मैंने शेयर कैपिटल में डाले थे। लास्ट सेशन में मैंने इसे काफी डिटेल में समझाया है आपको। तो प्रीमियम भी मैंने बोला ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, तो इसीलिए ये कैपिटल नेचर का हमने अपने पास रखा हुआ है एज अ लायबिलिटी, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है तो हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी की साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सेपरेट अकाउंट बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ भी रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। बचपन में जो भी किया कोई बात नहीं, 11th-12th निकल गया, ग्रेजुएशन निकल गया, लेकिन वो गलतियां दोहरानी नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। अब जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं कि भाई कई कंपनियां होती हैं वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम को कलेक्ट करती है, और कहीं होती हैं जो केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ करती हैं। तो अलॉटमेंट, भाई मैं कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर आपको बोल रहा हूं मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट की जरूरत है, अब अलॉटमेंट के पैसे दे दो। तो आपको पता है कि जब मैंने अलॉटमेंट, मुझे पता है कि मुझे लेना है और मुझे पता है कि मैंने फेस वैल्यू से ऊपर पे शेयर किया, मेरा गुडविल है, मैंने उस पर प्रीमियम पे दिया है, तब क्या करूंगा मैं? तो ड्यू कर सकती हूँ वो एंट्री। कैसे करूंगी? मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल ही अकाउंट? क्योंकि अब आपका जो अमाउंट मेरे पास आ गया, यानी कंपनी के पास, वो अब कैपिटल पोर्शन हो गया, ठीक है। लास्ट सेशन को देखने के बाद ही इस सेशन को फिर से आप रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा तो आपके हो सकते हैं कुछ डाउट्स रह जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ओके।
Next we are going to discuss on issue of shares and discount because it's a very small topic. ठीक है, issue of shares at discount. Okay, so issue when the company decided to issue its shares at less than its face value. So in our last example, if we can, we have a face value, say rupees 10, but company issue its shares, issue price, or we can say issue at value, so 2 rupees is the discount. So when we can say the issue price of shares is less than, you can see the issue price is less than the face value. Do not memorize, just have a basic understanding. Okay, so that means the company issued the shares at discount. Okay, we discussed this example. So discount, we can say if company is issuing, that means a loss to the company. What it's called as a loss to the company, you can see. Do not memorize, it's definitely a loss to the company. So now the Companies Act 2013, as per section 53, Companies Act 2013 as per section 53 subclause 3. So I'm just mentioning the section 53. So Companies Act 2013 put a prohibition on the issue of shares at discount. So section 53 of the Companies Act 2013, a company cannot issue, shall not issue the shares at discount, except, there is one exception, except in case of section 54 for issue of sweat equity shares. So there is a prohibition. But there is an exception also. We love the exception of section 54. Okay, in case of section 54, company can issue the shares at sweat equity share. Okay, so sweat equity. So in case of any shares which is issued by the company at discounted price, it will be amounts to a void. Okay, it's a void ab initio, and the companies, if issue the shares and at discount, they have some penalty provisions. So company, if contravenes any of the provision of this section 53, the company shall be punishable with the fine, and that fine should not be less than 1 lakh rupees, if you can get into a knowledge, and it may extend to the 5 lakh. And those who are involved in this kind of default, they are also punishable with the imprisonment for the term, which may extend to the say 6 months. Okay, or maybe an amount. That's a theoretical portion. Okay, so this is all about the issue of shares at discount. So please give me a moment to conclude in the other language. तो कंपनी ने अगर डिसाइड किया कि वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रही है, ठीक है, डिस्काउंट यानी जो इशू कर रही है वो फेस वैल्यू से कम पे है. हमारे लास्ट एग्जाम्पल पे फेस वैल्यू हमने 10 ली और डिस्काउंट था 8, तो 2 रुपये क्या हुआ, जो है डिस्काउंट हो गया. और डिस्काउंट जो होता है ना, जब भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो वो नुकसान में जा रही है, वो लॉस है कंपनी को. ठीक है, जनरली जो है हमारा प्रोहिबिशन दिया गया है कंपनी को, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कि कंपनीज जो है ना अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती. ये सेक्शन 53 में मेंशन किया गया है कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया है साथ ही साथ सेक्शन 54 के अंदर कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स दे सकती है. ठीक है, यानी केवल एक ही क्राइटेरिया है. ठीक है, अगर कंपनी इसके अलावा शेयर्स को इशू करिए डिस्काउंट पे तो उसे वॉइड एब इनिशियो माना गया है और फिर पेनल्टीज एंड फाइन्स के प्रोविजन है. ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस योर सिक्योरिटी प्रीमियम, issue of shares at premium and issue of shares at discount. We covered all the 3 areas and we understood in very detail about the issue of shares at par, at premium and at discount. Okay, in the next session we try to solve few numericals, and then after understanding those numerical we'll do with step by step, we'll also take the call of your what we can say call scenario and the forfeiture, reissue, everything we are going to discuss in very detail. But it's my humble request to refer every session, understand those theories and try to, because once you understood the theory, your numerical will get a much easier. Okay, try this strategy and follow it and stay connected. We'll do n number of theory and numerical portions. Till then, take care, bye bye and Jai Hind.